Hello, guys. So, welcome everyone once again to another episode of the Reflective Talks. I am your host, Saurabh Sharma, aka Meet the Wizard, and we are back with the episode 8 of the season. And once again, with me is my lovely co host, Komal Chalani, who is a psychologist and a hypnotherapist. Hi, Komal. Hi, Saurabh. How are you? All good. How are you doing? I'm good. Excited for today's episode? Yes, of course. So, 8 एपिसोड हो गए सौरभ कंफर्म करना रहता है ना, कंफर्म करना बहुत जरूरी है। वो होता है जैसे सेट पे कहते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन, तो उसी की तरह होस्ट रेडी, को होस्ट रेडी, ऑडियंस रेडी, गेस्ट रेडी, देन लाइव जाएंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नोइंग एंड मैनेजिंग एंजाइटी। सो वी विल टॉक इन डेप्थ अबाउट ऑल द एंजाइटी इश्यूज एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट एंड हाउ वी कैन हैंडल इट, द सिम्टम्स, and the experts will talk detail about it obviously. So आज के जो हमारे expert है talking about knowing and managing anxiety के ऊपर is Dr. Baljeet Kaur, who is a homeopath and a hypnotherapist. Hello ma'am, welcome to the show. Hi Saurabh. Hi Hello, Komal. ma'am. Hi. How are you? We both are doing good. How are you? Yeah, वो जरूरी I'm है. good with both of you. Okay. So before Komal takes over and the experts talk about the anxiety, थोड़ा सा heads up लोगों के लिए. So throughout the show guys, you guys can ask any questions whatsoever is in your mind. और एक हमारा special segment होता है especially for audience questions, जिसको हम end of the segment में लेते ही लेते हैं. So आपके मन में कोई भी doubt है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, do not feel hesitated and ask down into the comments. I'll be there in the comments talking with you guys, no issues. बाकी experts जो हैं आपके सवालों के जवाब last segment में जरूर देंगे. And plus like the stream so that it get recommended to more and more people can join it. जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोगों को फायदा होगा. And if you are already here on the channel, आप अगर फॉलो करते हैं हमारा कंटेंट और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे then do click that subscribe button, which is obviously free of cost. And now going ahead with the podcast. So Komal, over to you. Thank you, Saurabh. Okay, so सौरभ ने ऑलरेडी टॉपिक का ओवरव्यू दे ही दिया है एंड अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस पेंडेमिक में हम सब ने एंजाइटी थोड़ी बहुत फेस की ही है, फील की ही है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी की कब किस तरीके से वैक्सीन आएगी, कब ये सारी चीजें जाएगी, सब कुछ अनसर्टेन था एंड उस चीज की वजह से हम सब ने एंजाइटी फील की है. एंड अगर हम देखें तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दिस टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस आर वेरी कॉमन. इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है एंड बहुत सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन भी मिलता रहता है, राइट? सो एंजाइटी के बारे में ज्यादा ना बताते हुए आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. हम डॉक्टर बलजीत से पूछते हैं कि एंजाइटी क्या है और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. प्लीज मैम एक्सप्लेन व्हाट इज एंजाइटी. विल स्टार्ट विद explanation of anxiety. See, technically defining anxiety is a very vague, diffuse, and an unpleasant feeling. It's Yeah. very vague, very unclear, diffuse. I mean, all over. You can't concentrate it somewhere. Feeling is all over, and
it's a very unpleasant feeling of fear and apprehension. It's a normal human emotion. We all go through the same at some point or the other, right? Yeah. Like, if somebody is faced with some problem back home or at work, or maybe a student who's about to take up a test. So if they feel anxious, it's very normal. It's very Yes. normal. And when an individual is facing a potentially harmful situation, uh, feeling anxious is not just normal but essential for the survival as well. जैसे Yeah. अगर हम एक crowded street cross कर रहे हैं एंड उस समय अगर हम एंशियस फील करते हैं, सो दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, बिकॉज अगर हम एंशियस फील कर रहे हैं, सो दैट विल मेक अस इंस्टिंक्टिवली लुक बोथ द साइड्स एंड देन क्विकली क्रॉस द रोड. So Yeah. that is a situation where feeling anxious is not just normal but necessary for survival as well. Yes, true. Right. So basically, anxiety is a kind of response to the stressful situation, right? Absolutely. Okay. So what is the difference between stress and anxiety? Like both these terms we use together, sometimes we use interchangeably. So what is the difference between them, or how they are linked together? I mean, with each other. Right. Let me tell you something about stress. A lot of people have worked in last almost 30-40 years. Lot of people have worked on stress. And जिन्होंने situation के साथ काम किया, उन्होंने definition दिया around the situation. Okay. कुछ लोगों ने काम किया bodily responses के ऊपर, तो उन्होंने अपनी definition को bodily responses के हिसाब से दिया. And some of the groups have given the definition on mental reactions, mental responses. But the best definition I like is given by Dr. Falan, Dr. Lakhani and their team, and which says they have tried to combine all the various definitions available. And they say that stress is a phenomena. Okay, it's not just one thing. Stress can be defined as in a situation when you are required to make some adjustment. Okay, that situation is known as stressor. In order to make those adjustments, your body will give some responses, your mind will give some responses, and there will be some outcome. You can say, okay, there was this situation and I was able to cope up. So that is a positive outcome. Then there'll be people who will come up with, this was the difficult situation, but I could not cope up. So there can be negative outcome as well. But all these things, all these events in a sequence together are known as stress. Whenever there is, we are exposed to a situation which is posing some demand for adjustment. And in order to make that adjustment, some response is given by our body and mind. And the outcome, all these in sequence is known as stress. Okay, so anxiety is one of the ways your mind is giving response to that stressful situation. Right, so anxiety is basically because of a stressful situation. Right? Yeah. So this is the connection. Anxiety is our brain's way to alert us from the potential threat, to save us from the upcoming danger. So anxiety is very natural, and we all feel it. We all express it when we are in a stressful situation, right? Right. Okay. Right. So basically, what happens in our body at the time of anxiety, or when we feel anxiety or anxious? See, there are certain symptoms given by the mind and the body. Okay, so the symptoms can be like nervousness, breathlessness, or difficulty breathing, choking sensation, बहुत जोर से heart beat सुनाई देना, palpitations of the heart, palpitations, yes, increased muscular tension, cold sweaty palms. Yes. My palms are as well cold. Cold sweaty palms, restlessness, heaviness in chest, headache, some stomach upset,
difficulty falling asleep. So there are Yeah. variety of symptoms. Sometimes people may have nightmares, Yes. increased frequency of urination, nausea, vomiting. So there are variety of symptoms. And the commonest one, which is talked about very commonly, is butterflies in stomach. Yes. So that is the feeling. Then these are all the symptoms with which you can recognize that, okay, you are having anxiety. Everyone may not have all the symptoms. There may be some of the symptoms, and the other person might be having some other set of symptoms. But these are generally the symptoms when we are having anxiety, when we are feeling anxious. These are generally the symptoms to recognize, okay, this is anxiety. ओके सो जो भी आपने सिम्टम्स बताए वो पूरी लिस्ट में से देयर आर सम सेट ऑफ सिम्टम्स जो हम फील करते हैं या हम हमारा बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करता है तो हमें पता चलता है कि वी आर फीलिंग एंजाइटी और समवन इज फीलिंग एंग्शियस राइट और इसकी इंटेंसिटी भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती होगी लाइक absolutely we can categorize this into 3 categories. One is normal healthy protective anxiety. Isme generally the person may be symptom free or is if having symptoms, very mild symptoms, then it is short lived. It's a normal concern. When the situation or the stressor goes away, the anxiety as well goes away. And this does not require treatment. This is normal protective anxiety, which will help you prepare for the upcoming stressful situation. Yes, right. True. Then people can have reactive anxiety. In this, they have symptoms, but the symptoms are intense. Of course, they are transitory. थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं, but they are so intense that the individual might require some sort of treatment. Okay, and this is also when the stressor goes away, the anxiety will go away. But the symptoms, when experiencing the symptoms, they can be so intense that the individual might require some sort of treatment. Like if I give you an example, student life में हर एक को anxiety होती है, and कुछ लोग ऐसे होते हैं जो anxiety है तो बैठते हैं, prepare करते हैं, and then on the very day they'll be calm, quiet, comfortable. Okay, so absolutely symptom free, that was protective, that was motivating. But then people like us, they might be having headache, not able to sleep the whole night, and then stomach upset. And I used to have one client who was a student of dental third year, and very studious and performing at the level best. I mean, she was one of the best in that batch. But every night before the exam, she used to have fever, vomiting, stomach upset, and this required treatment. I mean, this stomach upset and headache and not able to sleep. These symptoms, she used to, require treatment for this. मैम आपने जब एग्जाम के पहले की एंजाइटी की बात करते हैं सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे अभी भी याद है मास्टर्स के टाइम पे जब हमारी एग्जाम्स होती थी स्पेशली फाइनल एग्जाम्स हम ग्रुप स्टडी करते थे लाइक एक दूसरे के साथ बैठ के ये वो काफी सारी चीजें एक दूसरे को एक्सप्लेन करना एंड पढ़ना एंड मुझे जब भी मैं अपने ग्रुप में देखती थी सबसे ज्यादा मतलब हाईली एंशियस मैं हुआ करती थी एंड एक ऐसा पॉइंट आ जाता था कि एक टाइम के बाद मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है जो भी मैं रीड कर रही हूँ मुझे ब्रेक लेना पड़ता था और या तो मैं बहुत सारा पानी पीऊंगी मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी और आई टेक अ शावर और कुछ भी बाद आधा पौना घंटा अपने आप को रिलैक्स करने के बाद मैं वापस से रीड करना शुरू करूंगी और मैं थोड़ा बहुत फोकस कर पाऊंगी आई स्टिल रिमेम्बर वो एंजाइटी को मैनेज करना लाइक इट वाज नॉर्मल रिएक्शन कि हाँ एग्जाम्स है कल फाइनल एग्जाम्स है कैसे होगा क्या होगा बट मेरे साथ बाकी के लोग थे उनके लिए काफी इजी था उस चीज को मैनेज करना बट मेरे लिए वो सिम्टम्स काफी ज्यादा होते थे
Right. Yes, yes. Yeah, one of the symptoms and generally be faced by the students is not able to concentrate before Yes, not able exams. to concentrate. Yes, Not able yes, to yes. concentrate. Concentrate. So this is the reactive kind of anxiety. Then there is third is chronic anxiety, which becomes a part of the individual. You know, that person is constantly living under fear, and उनकी normal routine disrupt होने लग जाती है. And in such a case, it requires treatment, and treatment may be running for a little longer time. या जनरली हमारे पास केसेस भी उसी तरीके से आते हैं, लाइक जब तक थोड़ी सी नॉर्मल हेल्दी एंजाइटी है वो तो हमें पता ही है कि हम सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में, और हर न्यू सिचुएशन में नॉर्मल है, यूजुअल है वो चीज को फील करना. एंड अगर रिएक्टिव एंजाइटी की बात करें तो वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब फील करते हैं, हम काफी हद तक मैनेज भी कर लेते हैं अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, अलग अलग चीजों के मतलब कोई भी चीजें ट्राई करते हुए, टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते करते हम थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लेते हैं. बट जब ये सिचुएशन मतलब हम इतनी ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके वो सिवियर लेवल आ जाता है, क्रॉनिक लेवल आ जाता है कि जब हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है, राइट. एंड हमारे पास जब केसेस आते हैं तब वो इतने सिवियर लेवल पे जाके ही आते हैं, लाइक इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉलो देयर रूटीन, टू डू देयर वर्क नॉर्मली, और टू रिमेन इन अ पीसफुल और काम सिचुएशन, राइट. Absolutely. Right. That you know, when the anxiety and symptoms are so severe, then it is not normal anxiety. It is more towards the anxiety disorder. Okay. So it is more towards the anxiety disorder. Okay. So what is difference between anxiety and anxiety disorder? When the severity or the duration of all these symptoms, whatever the individual is experiencing, that is out of proportion of the original trigger. And it is developing some physical symptoms as well, maybe raised blood pressure, headaches, nausea, vomiting. So these responses are intense and they are moving from anxiety to anxiety disorder. Okay. Then there can be people experiencing anxiety without any potential threat. In such a case, it is not the actual threat or actual stressful situation. It is the perceived stress. The person is having some thoughts which are making him experience this anxiety, and so that is a case where again the anxiety is not normal. It is moving from anxiety to anxiety disorder. Okay. Ma'am, I have seen in people, I mean mostly in clients when they come to us, बहुत बार वो हमारे साथ ऐसे शेयर करते हैं कि मैम मुझे पता है कि मैं एंशियस फील कर रहा हूँ या वो पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ और मुझे यहाँ से इस तरीके से मूव करना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से डील करना चाहिए, बट मुझे पता ही मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट मुझसे हो ही नहीं पाता, मैं उस टाइम पे ऐसे फ्रीज हो गया हूँ, ऐसा फील करता हूँ, लाइक मुझसे हो ही नहीं हो रहा. तो ये फ्रीज रिस्पॉन्स या हम अगर बात करें कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ. राइट. See, anxiety जब हो रही है, that is the your brain's way to make you aware of the upcoming stress, right? उस समय क्या हो रहा है? There is a hormone released which is known as adrenaline, and adrenaline is responsible for this kind of reaction, fight, flight or freeze. So उस समय thinking process बंद हो जाती है. There is no conscious thinking. The back part of the brain, मोटे तौर पे अगर हम बोले, which is reactive brain, that is functioning, and of course if there is some potential threat, it is preparing you for the upcoming threat. But in cases where there is no potential threat but this individual is still feeling anxious, so ऐसे individuals में again there is adrenaline rush which is leading to fight, flight or freeze response. Like, you know, there can be this can be seen in phobias. कुछ specific चीजों और object और animals का डर होता है. That is one of the type of anxiety.
जिसमें हम स्पेशली देख सकते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स भी देख पाते हैं एंड फ्लाइट एंड फाइट एज वेल भी दिखता है. See, when we are crossing the road, we need to make adjustment in our body and we need to adjust our pace in such a way that we quickly cross the road, right? Yeah. Now, if we freeze there, that's difficult. Yes. Unimaginable. Right. Yeah, in specific phobias like dog phobia, you know, a lot of kids come up and they are so scared. कि वो even if you show them dog photo, they are scared, hell scared, and they have very intense anxiety. So flight and freeze response are there, you know. There's no option to fight back. You can't fight with a dog, right? And so either the two options left are either you run at your level best or maybe just freeze there as if you're dead. Yeah, there's no movement. So this is because of the adrenaline, that chemical messenger, which is making all those required changes to adjust to the situation. Okay. So fight, flight, and freeze response. Freeze. So in fight response, we physically confront the situation. We fight back, right? And in flight response, we try to run away. We skip the situation. Yeah, it is. I mean, the anxiety is preparing you for certain type of reaction. Yes. Either you need to potentially physically confront the situation or just run away from there. And then this freeze kind of responses as well seem. A lot of students who face anxiety and who have anxiety issues, they also come up with this kind of complaint कि मैंने prepare किया था अच्छे से लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आया. I could not recollect anything and I did not write anything. So that's a typical freeze response. Yes. And this is because of adrenaline rush in our body. So our anxiety is preparing us to respond for the to upcoming situation. potential danger. Potential It is basically saving us from the potential danger. Yeah. So these are the different ways, right? जिस तरीके से हम respond करते हैं या react करते हैं to the situation. जैसे आपने बताया, I'm working with kids and adolescents and ये मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है कि freeze and flight response, like बहुत बार ऐसा होता है कि वो prepared नहीं होते किस तरीके से हमें situation को fight करना है. So freeze and flight response ज़्यादा मैंने उनमें देखा है, especially in kids and adolescents. और अगर मैं बात करूँ बिफोर पैंडेमिक, लाइक लास्ट ईयर हमारे पास इतने सारे केसेस आते थे स्कूल रिफ्यूजल के. रात में बच्चे आराम से अपना बैग पैक कर रहे हैं, अपनी बुक्स रख रहे हैं, इवन मम्मा को बता रहे हैं कि मम्मा कल मुझे लंच में ये लेके जाना है. एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ गोइंग स्कूल या तो हाई फीवर आ जाएगा, या तो वॉमिट हो रही है, या तो चक्कर आ रहे हैं, या तो जाने के बाद स्कूल में कुछ हो जाएगा. एंड देन टीचर्स कॉल पेरेंट्स और पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं. लाइक कोई ना कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से वो एंग्शियस फील हो रहे हैं, बट उनका बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. Absolutely. Nowadays, there are a lot of cases, you know, and even exam-going students, we get to hear this many number of times कि इस बार drop कर दिया, exam नहीं दिया. हाँ. So, of course, this is beyond their control, and they don't think they are capable enough to physically confront the situation and go and attempt the exam. So flight is the only option left, or maybe some of them come up with freeze response that I could not write at all. So this is definitely not a normal anxiety. There is this is moving into anxiety disorder. एंजाइटी डिसऑर्डर, करेक्ट. Absolutely. जहाँ पे हम फेस ही नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, वी कंप्लीटली रन अवे, वी कंप्लीटली स्किप द सिचुएशन, राइट? और स्किप द सिचुएशन. सो यहाँ पे जैसे हमने फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात की, इसी तरीके से फ्रीज रिस्पॉन्स से मुझे एक केस याद आ रहा है. जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड एंड I mean, उसने अपना ही एग्जाम, मतलब अपनी ही चीज शेयर की मेरे साथ, एंड इट वाज लाइक कि वो एंग्जाइटी फील कर रहा था, लाइक पैनिक सिम्टम्स एंड ऑल. और उसे पता भी है कि मुझे किस तरीके से मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मुझे क्या क्या चीजें करनी है एंड ऑल, क्या करना अभी बाकी है, किस तरीके से सारी चीजें मैनेज करूंगा, हमें पता भी है. बट उनका बॉडी प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है. लाइक फॉर 4 to 5 days ही वाज इन अ बेड.
एंड वो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई कि वो उठ के कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा है, ना ऑफिस के लिए जा पा रहा है, ना बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहा है, नथिंग. मतलब वो 4 या 5 दिनों तक उनका उसका बॉडी कंप्लीटली फ्रीज रिस्पॉन्स में था. Absolutely. प्रिपेयर ही नहीं था कि मुझे किस तरीके से इन चीजों को डील करना है. राइट. Right. सो Right. फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स. Freeze respond. Yeah. Yeah. एंड अगर देखें तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ हम ये तीनों तरीके के रिस्पॉन्सेज को फील करते हैं, फेस करते हैं, और शायद हमारा बॉडी ये तीनों तरीके के रिस्पॉन्सेज देता भी है एंग्शियस सिचुएशन में. राइट. Absolutely. Absolutely. This is not in our hands. When we are Yeah. facing a difficult, stressful situation, Yes. the actual thinking process is shut down and it just happens. Your brain just Yes. tells you कि either you need to take a flight or fight or just freeze. जस्ट फ्रीज. या ये हमारे हाथ में नहीं होता है. It is not in our hand. Yes. Okay, so what are the different types of anxiety disorders? Like जैसे हमने अभी बात की कि anxiety and anxiety chronic, जब वो बहुत ज्यादा chronic हो रही है, manage नहीं कर पा रहा है, तो वो anxiety disorder की तरफ जा रहा है. So what are the Right. different types? Commonly encountered 6 to 7 types of anxiety disorders. One of Okay. them is generalized anxiety disorder, जिसमें generally the person is living under fear all the time and is worried about smallest of the activity, even the daily activity, daily routines. They are just worried about and they are living under lot of anxiety. They complain that it is difficult to control. They cannot control, and it might start affecting them physically as well. So this is generalized, which is also known as free floating anxiety. Floating anxiety, yes. Generally ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि एक सिचुएशन के बारे में वरी कर रहे हैं, followed by another situation, followed by the third. So they are Yes. constantly under worry, constantly They are worried. constantly worried. under worry. Yeah. Right, right. Then there are specific phobias, जिसमें कि certain kind of objects or animals का बहुत intense डर होता है. And social anxiety disorder, the individual is fearful about a social situation, and the anxiety can be so intense that the person is avoiding the social situation, maybe just a family get together, starts avoiding. There is a desire in specific phobia as well. There is a desire to avoid, you know. Yes, So if people have that intense phobia, fear of dog, they'll just stop going out of house. Yes, yes. उनके लिए घर से बाहर निकलना ही डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, घर से बाहर निकलने की बात अगर मैं ये डॉग फोबिया की बात करूं, हमारे पास एक क्लाइंट है एंड मतलब ही वाज लाइक 62 अराउंड उनकी एज होगी एंड उनको डॉग फोबिया था, साथ साथ में ओसीडी भी था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट केस फॉर अस टू हैंडल एंड उनके लिए इतना मतलब डिफिकल्ट था बाहर निकलना. तो दूर की बात, अगर घर में कुछ बात हो रही है, डॉग की आवाज आ गई, डॉग का डिस्कशन हो गया, डॉग नेम अगर किसी ने बोल दिया, तो भी उनके लिए मतलब उस टाइम पे लिटरली हम उनको पैनिक होते हुए देखते थे. सो इतनी हद तक का उनका वो फियर था, जो फोबिया था, वो इंटेंस था. राइट. सो वो उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए ही स्टॉप कर देगा. द फियर इज सो इंटेंस. So it is definitely disrupting the normal routine, your daily life, right? Totally, yeah. The same, almost similar sort of thing happens in social anxiety disorder. People start avoiding social gatherings. Yes. Of course, there is no potential threat, no potential danger. It is a perceived threat, and in this specific thing, we can see the self-talk going wrong. There are some thoughts, and the person is worried about maybe embarrassment, maybe the person is too much self-conscious, is fearing judgment by others or negative views by others, and all these negative self-talk gives so intense response that the person has the desire to avoid the social gathering, and they do avoid the social gathering. This can be seen in while facing a public speak. I mean, when you are supposed to speak in front of a mass or Yes.
Yes, yes, yes. So we have a Yeah. lot of these kind of cases who have public speaking issues. आपने जहाँ पे ये सोशल एंजाइटी की बात की, ये मैंने जनरली बच्चों में बहुत ज्यादा देखा, लाइक स्पेशली टीन एज किड्स, एंड पेरेंट्स आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल सिचुएशन और कंसर्न अबाउट आई मीन रियल सिचुएशन व्हाट चाइल्ड इज फेसिंग, कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्यों वो फेस नहीं कर पा रहा है, एंड दे जस्ट पुश देयर किड्स कि नहीं हम आपको चलना ही पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, इस पार्टी में जाना है, ये फेस करना है, ये ओकेशन है. बट बच्चे लिटरली इतनी ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे होते कि इतने लोगों को देख के ही मतलब उनके लिए अपने आप को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो कभी कभी मैंने देखा है बहुत इंटेंस लेवल की ये सोशल एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं हम लोग. Absolutely, absolutely. Then there's one another disorder. तुमने अभी नाम लिया panic disorder. Panic disorder is a repeated episode of feeling intense anxiety. Repeated episode of feeling intense anxiety, fear, terror, and this grows in intensity within few minutes. The person will be experiencing extremely fast heart rate, might be having too much of sweating, trembling, nervousness, choking sensation, shortness of breath, nausea, maybe chest pain, difficulty in some sort of discomfort in the chest, and might feel dizzy as well. So all these symptoms become very intense in few seconds only. So that is the kind of panic they face when in a stressful situation. Then another anxiety disorder is OCD, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder. Then agoraphobia is another type of anxiety disorder. Then post-traumatic stress disorder is as well anxiety disorder. And what happens is people who have faced calamities or people who have faced extreme situations like war, and especially in the growing age when they were child, so they become potentially vulnerable in the later life to suffer from anxiety disorder. I remember one of my family members had experienced Bhuj earthquake in 2001 January. 2001 January, and almost after a year, that is 2001 January, he used to feel anxiety. See that earthquake was very intense. It was high intensity. The complete Bhuj city was converted into rubbles, and that was the first-hand experience. So that fellow was experiencing anxiety even a year later. Like middle of the night, if there is some slight noise, he would just get up and put his hands on the wall and try to feel the tremors. So that is the impact of trauma, where one has seen trauma impact. Right. So the person become, if such a thing has been there, you have seen, while in the growing phase, so you potentially become vulnerable for one of the anxiety disorders in the later year. Yeah, and I have also seen sometimes we are actually not aware about the traumatic experience कि कौन सी चीज का trauma है and कौन सी चीज की वजह से अभी anxiety हो रही है, right? And when we work with clients, it becomes actually difficult to understand the root cause, to come up with the root cause for them. बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम उनके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. We'll start with the child वहां से लेके करंट एज तक आते हैं. देन धीरे धीरे पता चलता है कि वो कहाँ पे उन्होंने फेस किया था इस तरीके की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, इस तरीके की सिचुएशन जिसकी वजह से ये एंजाइटी अभी वो फेस कर रहे हैं. एंड इतने सिवियर लेवल तक की एंजाइटी है कि उनके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है. राइट. मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्डहुड में भी है, एंड बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कुछ रिसेंट पास्ट में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, एंड जिसकी वजह से हम एंजाइटी which has been very traumatic.
Very traumatic for the yes. individual. Yeah. मुझे एक केस याद आ रहा है मैम. I just would like to mention it ताकि viewers को और ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि ट्रॉमा किस तरीके से एंजाइटी क्रिएट करता है. Like there was a client 38-year-old male client हमारे पास आए थे and we were taking case history. उन्होंने सारे symptoms जो भी हमें बताया that was severe chronic kind of anxiety and जब हमने मतलब उनकी लाइफस्टाइल देखी, करंट सारा सिनेरियो देखा, there was nothing कि जो उनको उनकी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रेसर नहीं था या ऐसी कोई हम ऐसे बोले कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मतलब कोई थ्रेटनिंग हो और उनके लिए ऐसे पैनिक सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हो या उनके लिए एंजाइटी. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ट्राई टू एक्सप्लोर द पास्ट एक्सपीरियंसेस, कहाँ पे क्या कैसे हुआ था. वहां पे हमें ये पता चला कि व्हेन ही वाज किड लाइक 10 या 11 ईयर ओल्ड तब उनके घर के सामने कोई रहते थे और वहां पे भी उन्हीं के एज जितना कोई एक बच्चा रहता था और वो वहां पे खेलने जाते थे. एंड वो वहां पे जब खेलने जाते थे एंड उन्होंने जब ऐसे एक बार ऐसे देखा कि उसके फादर, वो बच्चे के फादर उसको उठा के ऐसे बालकनी में खड़े हैं एंड उसको ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा अगर तुमने ज्यादा आवाज की है, ज्यादा मस्ती की है तो. एंड इन्होंने सिर्फ ये देखा था एज ए चाइल्ड, उनके साथ नहीं हुआ था, बट वो डर अभी भी दिमाग में था. एंड जब ये बात आती थी कि उनको 10th या 11th फ्लोर पे जाने की बात आ रही है, उनको नया घर खरीदने की बात आ रही है, उनकी ऑफिस बदल रही है और वो कोई हाई फ्लोर पे है या 15 या 16 फ्लोर पे, वो इतने एंशियस हो जाएंगे, वो डायरेक्टली अवॉइड कर देंगे सिचुएशन को. मैं वहां जाके काम नहीं करूंगा, मैं वहां पे नहीं रहूंगा या वहां पे हम घर नहीं लेंगे. वो सुन के ही वो एंशियस हो जाते थे. Absolutely. डायरेक्ट वो चीज नहीं हुई थी, बट he just an experience. He was the witness to this kind of thing happening. Yeah, he witnessed the whole experience. Right. If you recollect, Komal, हम जब दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गए थे, there was this case and the girl was really forbid from with heights. You know, she could not climb beyond even second floor पे जाना was very anxiety creating for her. And a similar sort of childhood experience had come up in detailed history. Yes. And so she was having this height phobia, intense height phobia कि second floor के बाद third floor भी climb करना is a difficulty and the person is experiencing intense symptoms. Yes. और इसी तरीके का मैंने जैसे कुछ लोगों को देखा है, किसी को पानी से डर लगता है या नॉर्मल छोटा सा पूल है, स्विमिंग पूल में सिर्फ उसके नजदीक भी जाने से वो लोग डरते हैं, कहीं में डूब जाऊंगा, कहीं कुछ ये हो जाएगा. सो ऐसा बहुत बार होता है कि हमने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया है, शायद हमें याद भी नहीं है, बट वो एक्सपीरियंस, वो मेमोरीज हमारे अनकॉन्शियस में कहीं पे सेट हो गई है एंड लेटर ऑन वो ट्रॉमा इम्पैक्ट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रॉमा इम्पैक्ट लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन वो बाद में हमें फेस करना पड़ता है या हम फेस कर रहे हैं. Absolutely. Okay, so this were the anxiety disorders, right? तो बेसिक मतलब कुछ ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हम एंजाइटी फील कर रहे हैं या ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, कोई ऐसे कॉजेस? जहाँ तक हम कॉजेस की बात करें कोमल, कॉजेस आर नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड, but it can be genetic as well. You see anxiety disorder running in the family. Okay, then there are studies who have shown that there is some faulty neural pathway which is creating this anxiety. Brain chemistry is responsible for this, but not very clearly known. Of course, environmental stress is one of the factors which can cause anxiety. You know, people who have seen, like I earlier mentioned, people who have witnessed calamities, this pandemic, the very first thing you started this show with, pandemic is giving a lot of anxiety. People who have experienced extreme situations like death of a loved one in the family, dysfunctional family as well can be the atmosphere, the environment which can lead to anxiety disorder.
Yes. And then there are certain drugs. Withdrawal of certain drugs lead to anxiety disorder. Alcohol is very well known to cause anxiety disorder, and alcohol consumption is linked with anxiety disorder. So of course, these are the few of the causes, not very clearly understood though. Okay, okay. And Yeah. if I say एंजाइटी के कुछ ऐसे कॉजेज मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट एक और चीज मैंने जनरली देखी है, लाइक इफ आई मीन आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैं मतलब मैं ऐसे बोलूंगी आई एम एंशियस पर्सनैलिटी, दो माई Right. एंजाइटी इज कंट्रोल्ड एंड मैनेजेबल नाउ. एक टाइम था Right. जब बहुत ज्यादा मैं एंशियस हुआ करती थी, आज वो ट्रेट काफी कंट्रोल में है. तो Right. अगर मैं देखूं तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्न्ड बिहेवियर बेसिकली. मेरे Absolutely. घर में मैंने देखा है, वन ऑफ माय पेरेंट इज क्वाइट एंशियस, लाइक Right. छोटी बड़ी सिचुएशन, कुछ नई चीज फेस करनी है, कल ये चीज होने वाली है, कल ये लोग आने वाले हैं, एंड एकदम से वो एंजाइटी एंशियस बिहेवियर मतलब एंशियस रिस्पॉन्स उनका आ जाता है. सो वो सेम चीज मैंने देखी थी, मैंने परसीव की थी, और वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेरे अंदर उस तरीके के रिस्पॉन्सेज मतलब वो डेवलप होते थे कि मैं भी वो छोटी बड़ी चीजों में बहुत एंशियस वे में या एंशियस हो जाती थी, और एंजाइटी मेरी ऐसे मैनेज भी ना कर पाऊं थोड़े टाइम के लिए, ऐसा हो जाता था. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है कि वी लर्न दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. Absolutely. And then I missed on very important cause. Your anxiety may be linked with some of the physical conditions, physical disorder. Okay. The anxiety can be linked with heart disease. It can be linked with diabetes. It can be linked with acute gastritis, acutely happening some stomach upset. Yes. Then it is linked with thyroid issues like hypothyroidism. It is linked with one of the respiratory disorders, acute respiratory distress syndrome. Then, of course, drug use and misuse, withdrawal of alcohol. Then there are chronic pains which can lead to anxiety. Irritable bowel syndrome can lead to anxiety, and being a hypnotherapist, we very well know that irritable bowel syndrome का cause भी anxiety होता है. It's like it's a cyclical thing. Right? एंजाइटी की वजह से आईबीएस हो रहा है, या आईबीएस की वजह से anxiety create हो रही है. Absolutely. Yeah. Then hypercalcemia is also seen to be linked with the anxiety disorder. There are some kind of brain swelling, encephalopathy कहते हैं, उसमें भी anxiety feel हो सकती है. Pregnancy में anxiety feel हो सकती है. Yeah. Some of the tumors can cause मतलब produce certain hormones which can give rise to fight, flight and freeze response. So these are the medical conditions leading to anxiety. ये anxiety का cause हो सकती हैं. Recently, I had, I mean, in our society, an elderly person, he was experiencing this uneasiness. And the only thing he could feel was that his blood pressure was raised. So he was checking it out with his physician, cardiologist. उनके पास जा रहे थे बार-बार, and cardiologist examine करने के बाद कह रहे थे, no, there's no reason. It's simple anxiety because of which you're facing this blood pressure raise. But then, in spite of that, his blood pressure was not going down. They had been giving him medicines for blood pressure control. उसके बाद भी anxiety persist कर रही थी. Blood pressure तो आ गया control में, but anxiety was persisting. So he went to some other physician, and thorough examination में पता चला that he's having some prostate issue, because of which he was feeling that uneasiness. So anxiety sometimes, anxiety and anxiety symptoms can be linked because of some medical conditions. Okay. So it's a kind of psychosomatic condition, right? कि कुछ ऐसे bodily symptoms है या कोई conditions है या health issues है जिसकी वजह से हम anxiety feel कर रहे हैं, और sometimes anxiety की वजह से वो health conditions और ज़्यादा increase हो रही है या और ज़्यादा severe हो रही है, right? Right. यहाँ पे अगर हम ये बात, जैसे ही आपने ये cause बताया, medical conditions की वजह से भी बहुत बार ऐसे एंजाइटी आती है, उससे मुझे एक चीज याद आई, लाइक
इलनेस एंजाइटी की अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, उसी तरीके से ये रिसेंटली लाइक कोरोना पेंडेमिक में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि थोड़ी बहुत चीजें होने के बाद लाइक या थोड़ा सा फीवर आ गया, या तो फिर कफ हो गया, या तो फिर कोल्ड हो रहा है, या क्या मुझे बहुत ज्यादा कुछ और हो सकता है, या तो नहीं नहीं ये नॉर्मल सा फीवर नहीं है, पक्का कोरोना ही होगा. सो इस तरीके के केसेस भी मेरे पास बहुत आते. इवन वी फील समटाइम्स कि हाईली दे आर हाईली कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ कंडीशंस, या तो वो कंटिन्यूअसली वरी करेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कुछ होने वाला है, थोड़ा बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, नहीं मुझे कार्डियक इश्यूज है, मुझे ये चेकअप करवाना है, मुझे उसके लिए जाना है, इसकी ट्रीटमेंट करवानी है, थोड़ा बहुत हेडेक है या कुछ दिनों से ही हेडेक फील कर रहे हैं, दे आर लाइक नहीं नहीं पक्का ट्यूमर होगा, मुझे ये करवाना है, MRI करवाना है एंड ऑल. सो या बॉडी में भी कहीं पेन वगैरह हो रहा है तो वो पूरे बॉडी चेकअप के लिए चले जाएंगे. सो ये हेल्थ एंजाइटी में अगर देखूं तो मतलब इन दिनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं केसेस. लाइक मैंने खुद बहुत सारे केसेस डील किए, या बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया जब मैं उनको एक्चुअली रूट कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं या हिस्ट्री हम लेते हैं तो पता चलता है दिस इज अ इलनेस एंजाइटी. एक्चुअली देखा जाए तो उसमें से कुछ भी चीज नहीं होती है, लाइक कोई फिजिकल कंडीशन नहीं होती है, या दे आर नॉट सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल इलनेस, बट दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एंजाइटी. Absolutely, absolutely. We call this, I don't know whether this term is yet used or not, but we used to call it hypochondriasis. The anxiety is related to own health, you know. Yes, and yes. The individual is too much worried about contracting some of the very severe diseases or serious diseases. They keep visiting doctors. एक को मिलेंगे, Absolutely, this was very common in cardiac neurosis. You know, मतलब उसे लगेगा कि मुझे बस heart attack आने ही वाला है. So they keep visiting cardiologists and they will insist upon getting all the investigations done. लेकिन ये थोड़ी ही देर के लिए रिलीव करता है एंजाइटी को, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है. Even they don't believe the diagnostic reports. नहीं ये सब गलत है, ये सही नहीं है, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज है मेरे साथ. एंड लिटरली बहुत सिवियर लेवल पे ये एंजाइटी होती है, वो वेरी सिवियर लेवल. दिस इज डिस्टर्बिंग उनके डेली रूटीन को खराब करती है. They are not able to carry forward their daily tasks, course, and it is disrupting. Yes. Right, true. Right. So, this all are the basic causes, अगर हम ऐसे बोले कि जैसे आपने बताया कि क्लियर नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये कुछ causes हैं. Possibly, these are the reasons. Okay. So, जैसे मैम मैंने शो की शुरुआत में ही बताया कि लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दिस टू टर्म्स, लाइक ये दो मेंटल हेल्थ इलनेसेस, ये दो अगर हम डिसऑर्डर्स बोले तो वो मेजरली डिस्कस्ड है, बहुत ज्यादा डिस्कस होते हैं, हम बहुत नॉर्मली इन दो वर्ड्स को यूज भी करते हैं, राइट? सो अगर ये डिप्रेशन और एंजाइटी को देखा जाए तो ये किस तरीके से अलग है, किस तरीके से एक जैसे है, या अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये दोनों भी किस तरीके से लिंक्ड है, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए. Komal, before I tell you about anxiety and depression, I would like to mention that there are other mental conditions जिनके साथ anxiety can be found linked. Okay. So there are some comorbid conditions. Yes. Depression is one of them. Depression के patient में anxiety disorder का diagnose होना is not very uncommon. And anxiety disorder वाले को depression होगा, that is also not unusual. Then substance abuse may be, anxiety is linked with substance abuse. Attention deficit hyperactive disorder में भी anxiety disorder दिखता है. Eating disorders are also linked with anxiety disorder. And then trouble sleeping. Sleep issues are linked with anxiety disorder. Yes. Now coming to anxiety and depression, they are both normal emotions, right? Anxiety, they can be occurring sequentially to each other. Like, you know, for a person experiencing anxiety, ये कुछ situations को avoid करेंगे जिनकी वजह से they will feel devoid of the pleasurable experience.
and pleasurable experience न मिल पाना is ultimately leading to low moods. Yeah. Okay, or in some other people, depression means low energy. Low energy state can be so overwhelming that they don't have the energy left to get engaged in some routine activity which was pleasurable for them, and after a while re-engaging into those activity or with the world can give you anxiety. So this can occur sequentially to one another. Of course they are normal emotions. जैसे अगर कोई potential threat है और उस समय कोई potential danger है, उस समय थोड़ा सा anxiety feel करना is absolutely normal. या disappointment feel करना is absolutely normal in case of depression. And then they can have some similar symptoms like irritability, sleep issues, problem concentrating. These are few of the common symptoms, but definitely anxiety and depression have some other symptoms as well, wherein the mental health professional can definitely differentiate between anxiety and depression. Anxiety, when the fear, panic, or anxiety situations, when it is out of proportion from the stressor or the potential danger that is moving towards anxiety disorder. Then this if the person is constantly living under fear and worrying and finding it difficult to control, sudden panic attack, anxiety attacks, these are all going towards anxiety. And if the symptoms are so intense that they start disrupting your routine, that is the time person should seek help. Okay. Depression wherein can have overall impact. It will impact the life from all the sides, discouragement feeling, sadness, not able to sleep or maybe sleeping too much. Too much, yes. Yeah. एपिटाइट भी इम्पैक्ट होती है, बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं. There is a diffused feeling of hopelessness, very intense, and overall feeling of hopelessness. There can be anger, lack of motivation, absolute lack of motivation. There's no interest in life in general. So depression can be impacting the life from all the sides. जैसे मैंने बोला, insomnia, not just insomnia, the person might be sleeping too much as well. Feeling overwhelmed by the daily course can be one of the presenting symptoms for depression. Personal interactions भी बहुत ज़्यादा overwhelmed feel करवा रहे हैं. And if these kind of symptoms they exist beyond say a period of 2 weeks, that is the time individuals should seek help. So anxiety and depression are normal symptoms, normal emotions, and linked to each other, sequentially occurring, following each other. Or yes, we do have symptoms and criteria to differentiate, and one must seek help. Yeah, if they become intense. Yeah. Yes. And we have seen in most of the cases like depressive and anxiety symptoms together. Absolutely. And it's not very unusual to be diagnosed with both of them together. And anxiety disorders, be variety of anxiety disorders can be coexisting. Yes, true. Yeah. ये भी हमें anxiety disorders भी साथ में हो सकते हैं. Like generalized anxiety उनके लिए बहुत वो हमने देखा है उनके अंदर कि वो social anxiety बहुत ज़्यादा होती है. Generalized anxiety disorder जहाँ पे होता है, या फिर phobia है तो उनके लिए भी panic disorder साथ में होता है. Absolutely. Yeah. एक साथ 2-3 तरीके के anxiety disorders साथ में देखने को exist कर सकते हैं. Yeah. And it's not very unusual to be diagnosed with either of them. मतलब if you're suffering from anxiety disorder, you may be suffering from depression as well. Yes. If you're having depression, you may be having anxiety disorder as well. It's not very unusual. Yeah. So ऐसी बहुत सारी conditions है, comorbid conditions like physical conditions बोले या फिर mental health issues बोले जो anxiety के साथ हो सकते हैं या उनकी वजह से anxiety create हो रही है. हो सकती है. इसी तरीके से depression and anxiety भी linked है.
Right, ओके right, ओके। right, right. तो मैम अगर हम देखें कि जब कोमोर्बिड कंडीशन होती है, एक के साथ दूसरी इलनेस भी दिख रही है, या जस्ट हम एंजाइटी की बात करें कि सिर्फ बहुत सिवियर लेवल की एंजाइटी है, तो कब हमें ऐसे पता चलता है या कब हमें ये फील होता है कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? See, when the person is worrying too much, and worry or fear is out of proportion to the original trigger, okay, and then it starts disrupting the daily routine. The person is finding it difficult to control. These are the symptoms. They should seek help. And then they are feeling depressed, not able to deal with the troubles, maybe indulging too much into alcohol or some other kind of drug use, that is the time they should seek help. And if there are suicidal ruminations, if the person starts getting suicidal thoughts, that is the condition when they should seek help as an emergency. As an emergency, yeah. सो बेसिकली हम ये इस चीज़ पे नैरो डाउन कर सकते हैं कि अगर सिम्टम्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सो दैट इज़ द टाइम यू मस्ट सीक हेल्प. Either you should go to your physician or to a doctor, to a professional. एंड जैसे आपने मुझे बताया अभी कि जहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा सिवियर हो रही है कंडीशन एंड इट इज डिसरप्टिंग योर लाइफ एंड डेली रूटीन, तब हमें डॉक्टर को सीख करना चाहिए. जब भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं लाइक एंग्जाइटी इश्यूज के साथ, तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार नहीं मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो अलग अलग तरीकों से अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं. लाइक अभी तो ऑनलाइन भी अगर हम देखें तो इतना सारा स्टफ अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है जिनको वो वन और अदर भी ट्राई करते हैं एंड काफी हद तक वो मैनेज भी कर पा रहे होते हैं. बट अगर सिवियर लेवल होता है तो उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन चीजों को मैनेज करना. बट अभी जितने भी व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स या ट्रिक्स के थ्रू आप अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने की कोशिश जरूर करते हो, बट जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वो आपको हेल्पफुल रहे. कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स आपके फ्रेंड को या आपके कोई फैमिली मेंबर को हेल्पफुल रही है, मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल ना हो या उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आप बहुत अच्छे से मतलब यूज कर रहे हैं और उससे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी को भी मैनेज कर रहे हैं, बट वो सेम टेक्निक्स और ट्रिक्स किसी और को हेल्पफुल नहीं है. उनके लिए वो इन टेक्निक्स के थ्रू अपनी एंग्जाइटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करते हुए अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा. दैट वुड बी गुड मतलब डिसीजन टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, राइट? Absolutely, absolutely. See, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एंग्जाइटी सडनली शुरू हुई है, there was no apparent cause, or suddenly you started feeling anxious, that is as well the time to seek professional help. आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री लेने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी लगें तो करवा सकते हैं. Investigations, अगर सब blood tests and other investigations turn out to be normal, and there is no physical reason for your anxiety, then your doctor will be directing you towards mental health professional. वो आपको psychiatrist के पास भेजेंगे, refer करेंगे. And psychiatrist again आपसे detailed history लेंगे about how you're feeling, how long had you been feeling, what is the intensity, and then they have certain criteria. If the criteria are getting fulfilled, then the psychiatrist can arrive at a decision whether anxiety manage करने के लिए medicine की ज़रूरत है या बिना medicine के भी manage हो जाएगी. In case without medicine manage हो जाएगी. Or if there is some sort of clarity required in the terms that what kind of anxiety disorder is it, and what should be the treatment protocol, in that case as well the psychiatrist will be referring you or the individual to a mental health professional, a psychologist, a psychotherapist, or some other mental health professional.
Yeah. Psychologist and psychotherapist, they will again have some questions, detailed questionnaires, just आपके एक्सपीरियंस, आपके सिम्टम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे उन्हें थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर यू आर सफरिंग फ्रॉम. Then they can give you some टेस्ट, यू नो, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, सेल्फ असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट. There are various kinds of psychological tests which the psychologist will decide to give you, and which can help them figure out what kind of anxiety you are suffering from, and that can help them decide the treatment protocol, what therapy you need. So various types of scales are available, like Beck anxiety inventory, Hamilton anxiety inventory, specific phobia inventory, social phobia inventory. Lot of tests are available. But yes, I'm not the person. You are a better person to talk about all these inventories, Komal. So it would be nice if you come up with the inventory. आपने जो भी इन्वेंट्रीज बताई बलजीत मैम, मोस्टली वी यूज दिस इन्वेंट्रीज लाइक हैमिल्टन एंजाइटी इन्वेंट्री, एंड देन बेक्स एंजाइटी स्केल और इन्वेंट्री, एंड वन मोर वी यूज दैट इज स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी. अब ये स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी क्या है वो थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं तो उनको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. लाइक स्टेट एंड ट्रेट, स्टेट एंजाइटी इज लाइक जो अभी सिचुएशन है या कोई करंट स्ट्रेसर है जिसकी वजह से आप एंजाइटी फील कर रहे हो, और कितनी सिवियरिटी में आप वो एंजाइटी फील कर रहे हो वो मेजर करता है. उसके साथ ट्रेट, वी ऑल हैव अ वन पर्सनालिटी ट्रेट जिसको हम बोलते हैं एंग्शियस ट्रेट, या वो हाई है या लो है, वो सब में दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, वो सब में अलग अलग होता है. जैसे मैंने बताया कि आई एम एंग्शियस पर्सनालिटी, जो कि अभी वो काफी कंट्रोल में है, तो वो क्या स्लोली ग्रेजुअली हम उस चीज पे वर्क कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, राइट. तो एक वो ट्रेट होता है, तो वो ट्रेट में आपकी एंजाइटी कितनी है, मतलब वो एंग्शियस ट्रेट आपका कितना सिवियर है, कितना लो है, ये दोनों चीजों को हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन की जो एंजाइटी है वो सिचुएशनल है या उसकी पर्सनैलिटी पे है, हमें कहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. तो ऐसी बहुत सारी टेस्ट हैं जो मोस्टली पेपर पेंसिल टेस्ट होती है. आपको क्वेश्चंस को समझना है, पढ़ना है, एंड दैट यू हैव टू जस्ट टिक मार्क कि कहाँ पे क्या किस तरीके से आप फील करते हो, या तो फिर सिवियरिटी उनकी आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने परसेप्शन के बेस पे देनी होती है. सो ये सारी जो सेल्फ रेटिंग इन्वेंट्रीज होती है, जो क्लाइंट के परसेप्शन से हम समझते हैं कि क्या कितने लेवल तक की एंजाइटी है. इसके अलावा कुछ ऐसे रेटिंग स्केल्स होती है, इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो क्लिनिशियंस यूज करते हैं, प्रोफेशनल पर्सन यूज करता है, लाइक वी थेरेपिस्ट डू. हम क्लाइंट्स को उनके इंटरव्यू के टाइम पे, हिस्ट्री के टाइम पे उनसे पूछते हुए, उनके सारे सिम्टम्स को समझते हुए हमारे परसेप्शन के बेस पे डिसाइड करते हैं कौन से लेवल तक की एंजाइटी है और कितनी सीवियर है, राइट. एंड इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी टेस्ट होती हैं जिसमें जनरली ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक एंजाइटी है, लाइक ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी है आपको, या तो फिर कोई स्पेसिफिक फोबिया है, तो कौन कौन से तरीके की एंजाइटी, लाइक विच टाइप ऑफ एंजाइटी आप में ज्यादा है, एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादा है, या कितने लेवल तक आप फील कर रहे हैं, या कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट है. तो ये सारी चीजों को समझने के लिए भी थेरेपिस्ट डिफरेंट तरीके की टेस्ट यूज करते हैं, और जिसके बेस पे हमें, जैसे आपने बताया, जिसके बेस पे हमें काफी क्लियरिटी मिलती है कि हमें थेरेपी में किस तरीके से वर्क करना है. एक प्रॉपर वे मिलता है कि हम एकदम वेगली नहीं स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, बट हमें पता रहता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी पे कितना वर्क करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसे कितना प्रिपेयर करना है, और फ्यूचर चीजों के लिए, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के लिए हमें उनको इनेबल करना है कि वो किस तरीके से इन चीजों को फेस करे या डील करें. So these are some anxiety scales जो self rating scales भी होती हैं, और थोड़ा सा clinicians भी अपने हिसाब से अपने perception या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो असेस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है. Absolutely. Yeah. So ये तो हो गया कि लाइक जैसे हमें पता है कि ट्रीटमेंट to approach a doctor and what could be the course, you know, how they will be referring you to the specialist. Yes. ऐसे
बहुत बार होता है मैम, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, लाइक मेरे पास तो बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली डिप्रेशन एंजाइटी जब सिवियर लेवल पे होता है, एंड दे आर लाइक कि मैम हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें मेडिसिन नहीं लेना है, एंड अगर मेडिसिन ली तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, बहुत सालों तक चलेगी, हमें हैबिट हो जाएगी। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको एक्सप्लेन करना कि आप जिस लेवल तक की एंजाइटी है या जितनी सिवियर एंजाइटी है उसमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। लाइक मेडिसिन एंड थेरेपी दोनों साथ साथ में चलते हैं। हाँ, नो डाउट सिवियरिटी कम है तो हम उनको थेरेपी ही सजेस्ट करते हैं कि हम थेरेपी के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको बताना कि मेडिसिन लेना भी कितनी जरूरी है। आप क्या बताना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को कि मेडिसिन क्यों जरूरी होती है उस टाइम पे, एंड मेडिसिन क्या मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं हम उनकी हैबिट हो जाती है हमें, या हमें लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है? नहीं कोमल, इतनी ज़्यादा मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है कि मेडिसिन की हैबिट तो नहीं होती है, एंड मेडिसिन व्हेन टेकन अंडर द गाइडेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट, it is very safe, you know, nowadays medicines are very safe. हर एक का कोई साइड इफेक्ट इज नॉट कि बहुत नींद आएगी या नॉशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड दे आर नॉट एडिक्टिव एज वेल। मोस्ट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स में मेडिसिन अगर हम चालू करने का रीज़न इज द इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग वेरी इंटेंस सिम्टम्स कि हम वो थेरेप्यूटिकली उन्हें जो भी सिखाना चाहते हैं टू मैनेज देयर सिम्टम्स, दे आर नॉट एबल टू लर्न, दे आर नॉट इन अ स्टेट टू लर्न दोज थिंग्स, दोज टेक्निक्स. The symptoms are so intense, you know. Like being a hypnotherapist, I am mostly focusing on hypnotherapeutic techniques, self-hypnosis, and which are relaxation-based techniques. So what I encounter is that the person is so anxious, is not able to sit continuously at a place, and then they are not able to close their eyes. आंखें बंद करने से ही intense fear and lot of symptoms come up. So ऐसे cases में medicine लेना जरूरी है to control the symptoms, active symptoms of anxiety, and after that we can start with some of the psychotherapy. And medicine and psychotherapy can run parallel, and eventually you can taper down the medicine, and medicine can be stopped completely. And just practicing psychotherapeutic techniques will help you pull on your life, you know. And honestly, I always tell my patients that don't worry about the side effect. Life is disrupted at this level that we should focus on the effect of the medicine rather than the side effect of the medicine. Rather than the side effect, yes, true. और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैम, like medicines always work on symptoms, right? आपके symptoms को manage करती हैं, आपके symptoms की severity कम करती है, और जैसे हम बता रहे हैं, कब से discuss कर रहे हैं कि like the symptoms are disrupting your life, right? तो उन चीजों को manage करने में, handle करने में काफी हद तक हमें support करती हैं। But जो actual work हमें करना होता है, चाहे वो personality पे हो, चाहे हमें ये हमारी anxiety के साथ किस तरीके से उसको accept करके चलना है, किस तरीके से उसको आगे जाके मैनेज करना है, या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अगर होती है तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे, वो सारा वर्क हम थेरेपी में करते हैं, काउंसलिंग में करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड वो थेरेपी एंड काउंसलिंग में जो एक्चुअल वर्क हम कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब सिम्टम्स की सिवियरिटी इतनी हाई नहीं है, या सिम्टम्स मेडिसिन के थ्रू हम सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं, पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड, पर्सन इज एबल टू सिट इन द थेरेपी इन काउंसलिंग सेशन, राइट? Right. Absolutely. Okay. So medicine in severe anxiety cases is must, you know. Like if we talk about OCD, obsessive compulsive disorder, and especially when it is intense, the first line of treatment is medicine. Yes, true. And when the active symptoms, at least the compulsive behavior has come under control, then we can start with some of the psychotherapy. Depending on the choice, you know. Yes, true.
ओके एंड मैम एक और क्वेश्चन मुझे अभी एकदम से याद आ रहा है लाइक मेडिसिन की बात आई है तो बहुत बार क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं जाना है हम कोई और कुछ बता दो जैसे होम्योपैथ और आयुर्वेदिक चलेगा कि नहीं यहाँ पे के इसके बदले हम वो मेडिसिन ले लेंगे तो चल जाएगा ना बाकी हम थेरेपी का वर्क कर रहे हैं लाइक यू आर होम्योपैथ राइट तो आप हमें बताइए कि मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के ऑप्शन अगर हम देखने जाए तो ऑल्टरनेट देखने जाए तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन हम एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इलनेसेस में ले सकते हैं या कितनी इफेक्टिव रहती है Komal, I will not deny the efficacy of homeopathic as well as Ayurvedic medicines, but I can't be overclaiming as well. They are effective, definitely. Yes. But in certain symptoms, if when depression and person is having suicidal ruminations, that is the time we need to resort to allopathic medicines. That's an emergency and we cannot take a chance. So homeopathic medicines and Ayurvedic medicines like ashwagandha, they do help. But I don't want to sound overclaiming. Definitely, they are not the substitute to the allopathic medicine. All the antidepressants and anti-anxiety pills. I tell the same. Definitely, one can give it a try. But yes, the individual really needs to be wise enough. If the symptoms are getting beyond your control and very intense, then it is better to resort to take psychiatric help. Yes, and अगर हम देखें तो if you are approaching a good psychiatrist or a mental health professional तो वो ऐसे ही medicine नहीं prescribe कर रहे हैं like they are understanding your symptoms और वो एक एक symptom की severity क्या है आपकी personality क्या है अभी का आपका life situation क्या है उसके base पे आपका work routine क्या रहता है उसके base पे वो doses set कर रहे हैं आपके या तो completely आपकी lifestyle को समझ के आपकी personality को समझ के doses set हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी मेडिसिन लेने से हमें हैबिट हो जाएगी या तो फिर बहुत लंबे टाइम तक हमें लेनी पड़ेगी या उसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगी वो आजकल अगर हम देखें तो बहुत कम जैसे आपने बताया कि साइड इफेक्ट का क्यों सोचना है जब हमें पता है कि हमारी लाइफ ऑलरेडी हेल्ड अप है then we should be focusing on the effect of the medicine. Effect of the medicine, correct. One point I would here like to make is we must avoid doctor shopping. अगर हमने किसी डॉक्टर के पास एडवाइस ली है so generally psychiatrists they first prescribe the medicine for 5 days and then you need to visit after 5 days then they'll be prescribing it for next 10 days then for next 15 days like this they come up with what exact amount is required by you and if there is some problem if you are not getting relieved from your symptoms, you must go back and tell the doctor so that the doctor is able to make appropriate changes in the choice of medicine. ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है. Let me check with some other doctor. This is not advisable. This can increase the problem and make the problem even worse. Even worse. Yes, true. Yeah. आपकी condition और ज़्यादा worse हो जाएगी. Correct. हो सकती है. क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो ड्रग्स बॉडी के अंदर सेट होने में थोड़े से दिन लगते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक वो सेट हो रहे इतने में आप डॉक्टर बदल रहे हो और वापस से मेडिसिन बदल रही है वापस से पूरा डोज चेंज हो रहा है तो इसमें तो आप अपनी बॉडी के साथ और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए राइट और फिर हम बोलते हैं मेडिसिन तो कोई वर्क नहीं कर रही है राइट एंड मैंने बहुत बार देखा है कि और अगर आप डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भी जाना चाह रहे हो एंड यू जस्ट मतलब कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर लाइक वो भी आपको बहुत अच्छे से सजेशन दे देंगे जिनके पास आप रेगुलर बेसिस पे जाते हो अपने हेल्थ चेकअप के लिए या छोटी बड़ी इश्यूज फिजिकल इश्यूज को लेके वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं या एटलीस्ट उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपको बता पाए कि एंजाइटी किस प्रॉब्लम की वजह से मतलब क्या कॉज है आपकी एंजाइटी का या एंशियस फील करने के पीछे तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाने की जरूरत है साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है थेरेपी या मेडिसिन दोनों की जरूरत है या नहीं राइट
Right. ओके सो मैम अगर हम थेरेपीज की बात करें तो लाइक हमें आइडिया है ये जैसे कि हम सीबीटी यूज करते हैं थेरेपीज में डीबीटी हो गया कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी हो गई या इसके अलावा भी जैसे नरेटिव थेरेपी वगैरह हो गया तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड अप्रोचेज हैं जो हम थेरेपी में यूज कर रहे हैं राइट बट यू आर अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड मैंने आपकी प्रैक्टिस में देखा है कि यू यूज अ कोर हिप्नोथेरेपी आप हिप्नोथेरेपी मतलब हिप्नोसिस ही अपनी काउंसलिंग एंड थेरेपी प्रैक्टिस में यूज करते हो तो हिप्नोथेरेपी कितना इफेक्टिव है कितना ये सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस Komal, very honestly speaking, hypnotherapy is not a therapy in itself. It's an adjunct to the therapy. So most of the cases, very severe cases, I always advise them to take medicine and then start, let the active symptoms settle down. Then start with the therapy. And hypnotherapy basically first things first, every hypnosis is a self-hypnosis. You know, you train yourself. So the therapist is only a guide, right? And then what you are learning are the relaxation responses. See, जैसे हमने देखा कि एंजाइटी में क्या हो रहा है और there are some symptoms given by the body and some symptoms given by the mind. So basically mind में originate होने वाले thoughts की वजह से बॉडी में सम ऑफ द सिम्टम्स आर लाइक यू नो जैसे मैंने बोला एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिफिकल्टी ब्रीदिंग मस्कुलर टेंशन हियर एंड देयर सो दिस शोज कि अगर हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स सीख जाएं अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीख जाएं I guess internet अटक गया. Yes. Okay. I guess internet अटक गया. कोई बात नहीं. We'll wait. Not an issue. Okay. So till then, you share anything about hypnotherapy and anxiety. Like लोग आके I guess hypnotherapist के लिए related भी थोड़े stereotypes होते होंगे कि आप hypnotize करके like ठीक कर सकते हो. I'm saying very bluntly and very random thing, but I guess लोगों ने बोला तो होगा. You'll have to saying that. Hypnotize करके हमें भुलवा दो, sort of like that, probably. I'm extremely sorry, technical glitches. Okay, she's back. Okay, उन्हीं के साथ हम कंटिन्यू करते हैं मैम. We were talking about hypnotherapy, right? अभी सौरभ ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि ऐसे आपके पास क्लाइंट्स आके ऐसे बोलते होंगे ना कि हिप्नोथेरेपी आप ऐसे ही ठीक कर दोगे, आप बहुत कुछ जान लोगे, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी. Absolutely. There are a lot of myths and misconceptions about hypnotherapy. That is what I started with. Every hypnotherapy means hypnosis, means learning relaxation responses, and every hypnosis is self-hypnosis. The therapist is only a guide, and is training you basically to learn relaxation responses. And how it will help is, if you learn relaxation responses during anxiety, if you stop bothering about your mind and just try to relax your body, your mind will calm down automatically. So that is how hypnotherapy can help. Hypnotherapy otherwise can help in managing stress, can make you learn manage stress in a healthy way. And hypnotherapy of course will help you develop certain attributes in your personality, which again will lead to managing anxiety and stress in a better way. But otherwise hypnotherapy is not a therapy in itself. It is an adjunct therapy which should be running hand in hand with other psychotherapies or maybe pharmacotherapy. हाँ. जैसे हम बात करें मैम कोमल बीच में एक मिनट के लिए, like Saurabh,
हम किसी का दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते. हर एक इंसान का दिमाग उसके खुद के कंट्रोल में है. We are just the guiding factors. Yes. And if there is no compliance on the part of the patient, we are helpless. हम कुछ Yes. नहीं कर सकते. Yeah, yeah. We are हम absolutely कुछ भी नहीं कर सकते. जहाँ पे बात Right. आती है कि लाइक आप हमारे पास्ट के बारे में जान लोगे, आप बहुत सारी चीजें निकलवा लोगे, आपको समझ में कोमल, आएगा. if you remember, अपना एक बैचमेट होता था, वो बोलता था कि हाँ भाई तुम्हारे पास में तो खजाना गड़ा है, चाबी मुझे पता चल जाएगी. सॉरी, ऐसी कोई चाबी नहीं आती. एंड आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि भाई जो तुम बताना चाहते हो मैं उतना ही जानना चाहती हूँ, ज्यादा सुनने की मेरी भी इच्छा नहीं है. लाइक हम बहुत क्लिनिकली उसको यूज करते हैं. जहाँ पे हमें लग रही है कि जरूरत है, वहां पे ही हम जाके उस थेरेपी को उस तरीके से यूज करते हैं. एंड जैसे मैम ने बताया कि पर्सन अलाउ कर रहा है, तभी हम जाके हिप्नोसिस उनके साथ यूज करते हैं. वो कितना कंफर्टेबल है वो पहले हम देखते हैं. लाइक अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको ट्रांस में लेके जाना ही. Absolutely. Yeah. ओके. एंड जहां मैंने मैम आपने अभी ही मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी चेंजेस जब हमें करने होते हैं तब हिप्नोसिस हमें काफी हेल्पफुल रहता है. तो जैसे मैं एंग्शियस पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रही हूँ, तो जब ये ट्रेट एंग्जाइटी ज्यादा होती है तब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हिप्नोसिस. लाइक किस तरीके से हमें फ्यूचर में रिस्पॉन्सेज देने हैं, कोई भी सिचुएशन को हमें किस तरीके से कोई भी सिचुएशन में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, या उस टाइम पे हमें अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है. सो सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक सजेशंस जब हम क्लाइंट्स को हिप्नोसिस के दौरान या ट्रांस कंडीशन में हम दे रहे होते हैं, ट्रांस स्टेट में दे रहे होते हैं, तो मैंने सच में देखा है कि बहुत मैजिकली, बहुत वंडरफुली ये वर्क करता है. Absolutely. पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत अच्छे से. कोमल, हमने मोस्टली देखा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइटी केसेस में द सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड आर नॉट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल थ्रेट, but they are because of the perceived threat. It is some thought and some self-talk within the individual which is making them experience all these symptoms. Yes. So hypnotherapy can be good because it will make you aware of yourself. So with hypnotherapy you can learn introspection and becoming aware of yourself, what exactly is happening, what are your thoughts. So once you become aware of your thoughts, then only you will be able to change your thoughts. Your negative जो trait है, you know, कि negative thoughts ही आते हैं, negative ही सोचता है, pessimistic है. So this once you are aware of it, then you can change them and you can train yourself कि all right, these are just thoughts and they don't really have the potential to convert into anything. और अगर जैसे यहाँ पे अब बात करें कि ये परसीव्ड थ्रेट है, राइट? तो इसीलिए सेम कंडीशन में हर एक पर्सन का रिएक्शन या रिस्पॉन्स अगर हम बोले तो डिफरेंट होता है. भले ही सिचुएशन कितनी भी कैसी भी किसी भी तरीके की हो, शायद मैं एंग्शियस फील करूँ उस सिचुएशन में, कोई और होगा वो बहुत आराम से उस चीज को नॉर्मली काम मैनेज करेगा अपने आप को. सो दिस इज द परसीव्ड स्ट्रेस, करेक्ट? या परसीव्ड anxiety, stress, whatever. So you can train yourself to think in positive ways, or at least you can train yourself ki okay, this is the situation, what can I do, what can I do? At least you can train yourself to think like this ki theek hai, this is the situation, lekin ab isme main kar kya sakta hu. So these are the things in which hypnotherapy helps wonderfully. But definitely hypnotherapy is not a substitute to other psychotherapies. I mean, cognitive drill therapy is going to help wonderfully in case of specific phobias. Then DBT is going to help in OCD. CBT, DBT works wonder. Absolutely. With phobia, social anxiety. Hypnotherapy can go hand in hand with any therapy, whether you are using pharmacotherapy, homeopathy, ayurveda, psychotherapy, hypnotherapy can be part of everything. Okay. Lifestyle management as well. Right, true. Okay, so ma'am, कुछ टिप्स दीजिए किस तरीके से हम एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं. Yes, first lifestyle changes. Absolutely. These tips are really helpful. When you change your lifestyle, they do change
your reactions, your Yes. responses, you Right. know. So, first thing, learn about your symptoms. More you are aware of your symptoms, more you'll be prepared for the roadblocks coming ahead. You know, then cut down on certain foods containing caffeine. I mean, coffee, tea, energy drinks, colas. Cut down on all these caffeine containing drinks. Then refrain from using alcohol, eat right, exercise right, and exercising regularly. Say brisk exercising, some of the aerobic exercises, they do help manage our brain's chemical responses and help us improve the mood. Then maybe get good sleep, 6 to 7 hours of sleep, then practice meditation, mindfulness, and keep a journal. Keeping a journal, I what I really have come across in during this pandemic time, you know, when we learn to become grateful for what we have, Yes. Yeah. that at least helps shift the focus from the negative thought loop to the positive loop. So, maintaining a journal, maintaining a gratitude journal can really be helpful. Then, yes, talking it out with loved ones, friends, go meet if not possible, like in pandemic time, today's time, maybe over the phone, internet. Talk it out. Social connections, we are social animals, and connecting socially definitely is required for our well-being. Yes. Yes. So these Most are of the time, venting out helps absolutely, greatly. talking Yes. is mostly Yes. venting out, and Yeah. that Yeah. helps in great ways. Really helps greatly. And I have seen, Komal, a lot of my anxiety patient only have come up with this thing that if they have, if we can provide, you know, some support group kind of thing. There are Yeah. some Yeah. people who like talking about their issues to a person who has experienced similar sort of Huh. issues. Huh. So Huh. that helps them, you know, that motivates them ki, okay, if the other person is able to manage, I'll be also Yeah. able to manage. Peer guidance, kind of. Yeah. Peer guidance, Peer self-help support group. groups, Yeah. yeah, Self help yeah. group. Yeah. So taking help from such kind of groups is as well very useful, very useful. Then there are a lot of techniques. I mean, mostly सी मैंने तो ये समझा है कि जब एंजाइटी में आपकी ब्रीदिंग रिदम डिस्टर्ब हो रही है, सो अगर आप अपनी ब्रीदिंग रिदम को कंट्रोल कर पाते हैं, स्लो डाउन कर पाते हैं, that will eventually lead to lowering down of the anxiety. That will help Yeah. calm down the mind. So there are a lot of breathing techniques. There are a lot of grounding techniques which one must learn. And grounding techniques generally help to bring the focus in the present moment, Yes. Yes. becoming aware of the present moment, and definitely brings down the mind, calms down the mind. Okay. Yeah. Yeah. जैसे आपने ब्रीदिंग टेक्निक की बात की या ग्राउंडिंग टेक्निक्स की बात की, तो बेसिकली एंजाइटी में हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से मैं मैनेज करूंगा. सो हमें अपने आप को हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में लाना होता है. Absolutely. सो ग्राउंडिंग टेक्निक्स की अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमें प्रेजेंट में लाने के लिए, अपने आप को वो एंशियस थॉट से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. बेसिकली वो एंशियस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल रहती है. वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस, हमारी अलग अलग 5 सेंसेस को यूज करते हुए हम अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. एन नंबर ऑफ ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे दिखेंगी, अलग अलग सेंसेस को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आप अपने आप को You inhale for 4 seconds. Yes, you inhale for 4 seconds, and then you hold that breath inside you for 4 seconds. Then you exhale for 4 seconds, and then you are without breath for 4 seconds. That helps basically bring down the breathing rhythm. And that is one of the very good grounding techniques. And another technique as well, what you were talking about, was becoming aware of all the 5 senses.
and coming in the present moment. I really find breathing techniques to be very helpful when you are actually having anxiety, when you are having anxious feelings, because breathing is always there. You just need to calm down. So basically, these are known as bottoms up technique. You just forget about the mind and you try to bring down the rhythm of breathing, and that is what helps bring down your calm down your mind. So one of the breathing technique for our viewers, it can be deep breathing. I mean, cross your fingers, sit relax fully, put your hand on your stomach, and just gently close your eyes. Breathe in deeply and just focus on your stomach, your hand going up and down, up and down. So you can continue this. This is belly breathing. This is a self-regulating technique. This will calm down the breathing. This will bring down the rhythm of breathing, and definitely it will help calm down the mind. Right. So and then, as you said, Komal, there are lots of what suits them best. एंड जैसे हम ये टिप्स एंड टेक्निक्स या कुछ ब्रीदिंग एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, अगेन मैं उनको मैं ये रिपीट कर रहे हो, अपने एंग्शियस सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर जब ये एंग्जाइटी या एंग्शियस सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ जा रहा है कि जब आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने रूटीन को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस चीज में उसी तरीके की सिचुएशन को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. लाइक वो आपके लिए वो डिसीजन एंग्जाइटी या हेल्दी एंग्जाइटी में हम कर लेंगे, बट जब वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो रही है तो See, protective anxiety, you don't really need any sort of treatment. Yeah. But reactive anxiety, अगर आपके physical symptoms हैं, so suffering is not a sign of strength. Yes. And seeking help is not a sign of weakness.